Vehicle unions across Delhi-NCR have launched a 3-day strike from May 21, that is today, to May 23, triggering concerns over disruptions in cab, taxi and transport services across the national capital region. Notably, the protest has been called by more than 68 transport unions under the banner of the All India Motor Transport Congress and the United Front of All Transport Associations against the Delhi government's decision to increase the environment compensation cess on commercial vehicles entering the capital. The strike, described as a chakka jam, is expected to affect app-based cab services like Uber and Ola, along with commercial taxi operations, and peak hour local transport connectivity throughout the Delhi-NCR. Transport leaders say that the continuous rise in fuel prices and operational expenses has made survival increasingly difficult for drivers. Taxi and auto fares in Delhi-NCR have reportedly remained unchanged for nearly 15 years despite sharp hikes in the prices of CNG, petrol and diesel. Drivers claim that their earnings have dropped significantly while annual costs such as permits, vehicle fitness certificates, insurance and maintenance continue to rise. Several drivers participating in the strike expressed frustration over worsening financial conditions, saying it has become nearly impossible to support their families under current circumstances. Taxi driver Narendra Tiwari said that the drivers are receiving lower payments from ride-hailing platforms than before. And according to him, services like Rapido were paying around Rs 30 per kilometer during April. But rates have now dropped to nearly Rs 15 or Rs 16 per kilometer. Another driver, Dinesh Kumar, said that there is no proper pricing structure in the market anymore, and drivers are not even getting enough rides to sustain themselves. He appealed to the government to revise taxi fares and address the growing financial pressure on commercial drivers. Well, the unions have also opposed the Delhi government's decision to ban the entry of non-Delhi registered BS4 commercial goods vehicles from November 1, 2026 as part of the capital's pollution mitigation strategy. Delhi Chief Minister Rekha Gupta had earlier announced that interstate BS4 commercial goods vehicles would no longer be allowed to enter Delhi from that date, while CNG-powered electric and BS6 complaint vehicles would remain exempt. Transport unions argue that the decision lacks scientific and legal justification because BS4 vehicles are still legally permitted to operate within their prescribed lifespan. The unions are also demanding the rollback of the recently increased cess imposed on Delhi-bound commercial vehicles. And according to the transport representatives, the original purpose of the Supreme Court-backed environmental compensation cess was to discourage transit vehicles from passing through Delhi and encourage them to use the eastern and western peripheral expressways instead. However, they allege that the current implementation unfairly penalizes all the commercial vehicles entering Delhi, including those carrying essential commodities or entering the city empty for loading purposes. And in a letter sent to Delhi Lieutenant Governor Taranjeet Singh Sandhu and Chief Minister Rekha Gupta, the All India Motor Transport Congress said that drivers were facing economic exploitation and demanded immediate policy intervention. The unions accused app-based cab aggregators of operating arbitrarily, while drivers continue to suffer under what they describe as slavery-like conditions. They also pointed out that despite directions from the Delhi High Court last year to address taxi drivers' concerns and revise fares, no concrete action has been taken so far. And around 4 lakh registered taxi owners are expected to support the strike by staying off the roads during the 3-day protest. Union leaders have also warned that if the Delhi government fails to issue a notification increasing taxi fares within the next 2 weeks, the agitation could intensify into a much larger movement. However, not all the transport unions are participating in the strike, and a section of auto rickshaw and taxi unions has distanced itself from the protest, stating that services will continue normally. And the Delhi Auto Rickshaw Sangh clarified that the ongoing issues are mainly related to goods, carrier vehicles and transporters opposing the cess hike rather than auto and taxi drivers directly. General Secretary Rajendra Soni also stated that auto and taxi services would continue operating at railway stations, bus terminals and other locations across the city.
And other groups, including the Delhi Taxi and Tourist Transport Association, have also refused to join the strike, saying public inconvenience should be avoided during a period of rising international fuel prices. And despite the divisions among unions, commuters across Delhi-NCR are likely to face disruptions over the next 3 days, especially during peak travel hours. And while the availability of cabs and commercial taxis may remain uncertain in several parts of the region, essential public transport services such as Delhi Metro and DTC buses are expected to function normally throughout the strike period. That's all. बहुत बुरी कंडीशन है अभी, एक हफ्ते से बहुत बुरी कंडीशन है। जो पहले रेट मिलते थे वो आज की डेट में रेट नहीं है। 18 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक 30 रुपये किलोमीटर रैपिडो दे रहा था, जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कहिए तो दिखा सकते हैं, पर किलोमीटर का। और आज की डेट में 15 रुपये मिल रहा है, 16 रुपये मिल रहा है। क्या करेगा ड्राइवर लोग, बताओ मेरे को, कैसे क्या होगा? तो सरकार ने 20, 21 और 22। अब इसका मेरे पास सजेशन तो कोई भी नहीं है, बट मेरे पास वीडियोज क्लिप आ रहे हैं कि भाई 21, 22, 23 हड़ताल है। अभी देखो क्या होता है। अभी मेरे अकेले करने से तो हड़ताल होगी नहीं, जब सभी भाई लोग एक साथ खड़े होंगे तभी कुछ हो सकता है। तो सुबह से सवारी मिली आपको? कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग खड़ा हूँ 5 बजे से। दिनेश कुमार नाम है। ये क्राइसिस चल रहा है, क्या बोलेंगे आप? अरे इसमें क्या बोलना भाई, बस समझ लीजिए कि चल रहा है कुछ धंधा पानी, बाकी तो कुछ है नहीं है मार्केट में। कुछ भी मार्केट में नहीं बचा हुआ है, ना कोई रेट है, ना कोई ड्यूटी इतना ज़्यादा आती है। और बस ये है कि 200, 300, 150 वाली ड्यूटियाँ करो, बस वही बहुत है। सवारी मिली आज आपको? नहीं, सवारी अभी नहीं मिली। सवारी एक राइड मिली थी सुबह मॉर्निंग में, वो भी 200 रुपये की। उसके बाद अभी कोई राइड वाइड नहीं है। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को ये बोलना चाहेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए और रेट वेट का ध्यान दीजिए। थोड़ा जो टैक्सी हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा स्पेशल ध्यान दीजिए। बहुत बुरी कंडीशन है अभी, एक हफ्ते से बहुत बुरी कंडीशन है। जो पहले रेट मिलते थे वो आज की डेट में रेट नहीं है। 18 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक 30 रुपये किलोमीटर रैपिडो दे रहा था, जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कहिए तो दिखा सकते हैं, पर किलोमीटर का। और आज की डेट में 15 रुपये मिल रहा है, 16 रुपये मिल रहा है। क्या करेगा ड्राइवर लोग, बताओ मेरे को, कैसे क्या होगा? तो सरकार ने 20, 21 और 22। अब इसका मेरे पास सजेशन तो कोई भी नहीं है, बट मेरे पास वीडियोज क्लिप आ रहे हैं कि भाई 21, 22, 23 हड़ताल है। अभी देखो क्या होता है। अभी मेरे अकेले करने से तो हड़ताल होगी नहीं, जब सभी भाई लोग एक साथ खड़े होंगे तभी कुछ हो सकता है। तो सुबह से सवारी मिली आपको? कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग खड़ा हूँ 5 बजे से। दिनेश कुमार नाम है। ये क्राइसिस चल रहा है, क्या बोलेंगे आप? अरे इसमें क्या बोलना भाई, बस समझ लीजिए कि चल रहा है कुछ धंधा पानी, बाकी तो कुछ है नहीं है मार्केट में। कुछ भी मार्केट में नहीं बचा हुआ है, ना कोई रेट है, ना कोई ड्यूटी इतना ज़्यादा आती है। और बस ये है कि 200, 300, 150 वाली ड्यूटियाँ करो, बस वही बहुत है। सवारी मिली आज आपको? नहीं, सवारी अभी नहीं मिली। सवारी एक राइड मिली थी सुबह मॉर्निंग में, वो भी 200 रुपये की। उसके बाद अभी कोई राइड वाइड नहीं है। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को ये बोलना चाहेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए और रेट वेट का ध्यान दीजिए। थोड़ा जो टैक्सी हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा स्पेशल ध्यान दीजिए।